Hi guys, welcome to OS Hub or Odisha Job Academy. ଆମେ ମୁଁ ଏବେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ନଉଛି 29 ଆଜି ଜୁଲାଇ। ସୋ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, OPSC ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଇଛି ଏବଂ 16 ଅକ୍ଟୋବର 16 ଅକ୍ଟୋବର ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ। ସୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ସିଓର। ଓକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କି 16 ଅକ୍ଟୋବର ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସରି ଏବଂ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ୟା ଓଏସ୍ ହବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଏସ୍ୟୁର୍ଡ ପ୍ରିଲିମ୍ ବ୍ୟାଚେସ୍ ଓନ୍ଲି 500ରେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ମି ୟୁ ୱିଲ୍ ନେଭର ରିଗ୍ରେଟ୍। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମୋର୍ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ହିୟର। ଏବଂ ଅନେଷ୍ଟି ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଅନେଷ୍ଟି ଆମେ ଏଠି କାହା ସହିତ ଚିଟିଂ କରିବୁନୁ, କାହାର ପଇସା ନେଇକି ଖାଇଯିବୁନୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ସିଓର। ତୁମର ଯେତିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଦବ ତାରୁ ଅଧିକା ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍। ओके सो ये इंस्टॉल करी परिबो तुमे प्ले स्टोर रु अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर अछि ओएस हब ऐप माध्यम देले तुमे डाउनलोड करी परिबो। सिमिलरली एसो पई भी हमें प्रिपरेशन चालची रैपिड रिवीजन सीरीज एवं एज वेल एज मॉक टेस्ट पई मध्ये प्रिपरेशन करी परिबो। सेही टाइम मध्ये जॉइन करी परिबो। देयर हैज नेवर बीन ए सो इशू देखिबा वन बाय वन आजिरो इशू देखिबा। Okay, so आजिर इशू कौन ना there has been never been a better time to sports in India. ये मोदी जी कहते कौन ना ये जो फाइट या ऊपर देखियो डेट 44th चेस ओलंपियाड इन तमिलनाडु रे कैपिटल चेन्नई रे ये स्टार्ट ହେଇଛି। ଗତ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଗଲା କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ये इथର ଜଏନ୍ କରିନି। ओके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान कौन कला ना पाकिस्तान टीम एठी इंडिया को आसीबनी या पार्टिसिपेट करिबो नाही। तो या पर गोटे क्वेश्चन मु बनाइछि व्हिच सिटी इज होस्ट ऑफ 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड इन 2022 जोटे की करेक्ट आंसर चेन्नई। सो या ऊपर देखिबा पूर्वरु आमे जणिबा एटा केते नंबर होची 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड ये और चेन्नई रे होची। And this is a biennial team event which team from 190 country compete. Okay, बहुत important फायदा। So this is the second major global event of the sports जोटा कि इंडिया होस्ट करुची एवं वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच इन 2013 परे ये सेकंड टाइम 2013 परे ये 2022। तो दी इवेंट इनिशियली शेड्यूल होता रशिया रे एवं रशिया रे जो इन्वेजन जो सेटू बाहर कर आड़ी की इंडिया रे करा गला। सो प्राइम मिनिस्टर इनागुरेट कले। ओके ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1927 ये बहुत पुराना इज वन ऑफ द फर्स्ट गेम जोंडे की स्पोर्ट्स रो ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी था ये है चेस ओलंपियाड। सो ये बीइंग होस्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम and in Asia after 30 years. Asia ର 30 years ପରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ରେ for the first time world chess olympiad ହେଇଛି। 189 country participate ଏବଂ ये ପାକିସ୍ତାନ participate କରିଲା ନାହିଁ 190 ରୁ ଜଣେ participate କଲା ନାହିଁ। What is FIDE? FIDE କଣ ନା international chess federation. FIDE means the international chess federation is a governing body of the sports of chess. So it is regulate all the international chess competition all the over the world. ये regulate करे। It constitute a non-governmental institution. So ये तुम्हारो ग्लोबल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भलिया जोटा कि सेइथरे ये पाई आ यार फाइट जोटा कि हेडक्वार्टर जो करेंटली जो देखिबो ये लुजाने स्विट्जरलैंड रे पाई जिवो। इट वेरी फास्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ये वर्ल्ड रो सब वेरी फास्ट। तो केबे हितला 1924 रे पेरिस रे एवं अंडर द मोटो कोन ना जेम्स यूनासुमस बेसिकली लाटिन नो एटा लेखा छि वी आर वन फैमिली। तो सेही अनुसारे and largest one of the largest जोटे कि sporting bodies जे कि more than 190 country participate होଛନ୍ତି। then what number do not reveal about tiger reserve? So tiger reserve ऊपर आमे पढ़िबा कि डिटेल से देखिबा कि जेनेटिक कनेक्टिविटी हो रिसर्च या ऊपर कोन होची इन सिमिलीपाल एंड राजस्थान स्ट्रेटजी फॉर द फ्यूचर। सो आमे देखिबा कि टाइगर रिजर्व ये गोटे आर्टिकल अच्छी। ओके कि एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर और इंडिया रो टाइगर। सो इंडिया मस्ट नॉट लूज साइड of the fact that there are other factors critical to ensuring survival of the big cat.
So big cat ro amar India रे जानिछो more than 50% tiger in world रो जदि पाइबो India रे पाइबो India रो tiger reserve जो tiger project announce हला परे exponentially rise ହେଇଛି ଆମର tiger population ओके सो ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ରଖିବାର ଅଛି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର କୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଜିଲି ୟାକୁ ଇଏ କରିଦବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଟାଇଗର what is the name of the project to preserve the endangered tiger project Asian tiger project Royal Bengal tiger project tiger safety project tiger so project tiger तुम मैंने जानी चो okay हमें इंडिया रे so India has a 74% 70% of global tiger population and international tiger day जोंटे के 29 जुलाई ARU प्रेड ये आर्टिकल टा आसीथिला is an annual event जोंटे की पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हेइथिला 2010 रे सेबेटु ये पालन करा होची सेंट पीटर्सबर्ग एटी रशिया रे फर्स्ट इंटरनेशनल टाइगर डे 2010 रू ये सेलिब्रेट करा हो जे 29 जुलाई टाइगर डे बोली ये सेलिब्रेट करा हो सेंट पीटर डिक्लेरेशन ऑन टाइगर रिजर्व कौन थिला conservation this is resolution adopted in November 2010 by leaders of 13 tiger range countries the TRC assembled in जोटे की सेंट पीटर्सबर्ग रशिया it aimed to कौन ना promoting global system protection of natural habitat of the tiger and raise awareness लोगों के भीतर awareness ये करे भाई यार implementation program है लेकिन global tiger recovery program whose overarching goal was to double the number of wild tiger जोटा कि from about 3200 थिला सही समय to 7000 by 2022 so 13 tiger range country are कौन ना TRC जोटा कि tiger range country इटा 13 tiger range country कौन कौन ना इंडिया अच्छी बांग्लादेश अच्छी भूटान अच्छी कंबोडिया चाइना इंडोनेशिया लाओस म्यांमार मलेशिया नेपाल रशिया थाईलैंड एंड Okay, so the first ever initiative for conservation tiger was Project Tiger. There are 50 tiger reserve within the country. Out of 50 tiger reserve in the country, 3 reserve रे tiger नहीं. Only मिजोरम रो डाम्पा, बेंगल्स रो बक्सा, एवं झारखंड रो पालम. ये they have no tiger left. Okay, तो इंडिया को सही अनुसार देखो tiger reserve. ये prelim perspective रे इतना तो बहुत काम रहा है. Prelims and as well as mains रो conservation जो ने environment related ये रहा तुम्हारे कॉर्बेट हो दुधवा हो ये सब 50 टाइगर रिजर्व डू यू बिलीव दिस 50 टाइगर रिजर्व एमपी रो सबडो अधिका दैट कर्नाटक सेकंड मोस्ट ला कर्नाटक फर्स्ट ला एमपी इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रियली फॉल्टी काहे की कहा होची तुमे बिलीव करि परिबनी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई ये 2022 रिलीज हेची सहित रे इंडिया रो रैंक केते जानि छ तो out of 180 country 180 last रे तो ସେଇଠୁ କିଛି କ୍ରିଟିକ୍ସ इंडिया रो इवन एनवायरनमेंट मिनिस्टर वगैरह माने क्रिटिसाइज करछथि एटा कोन जो प्रोसीजर जो फॉलो करा होची ए कोन फॉल्टी ना ये मेथोडोलॉजी जे जोटा की है जे इश्यूज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू स्टडी ये सब गोटे आइडिया दिया आइची okay but देखियो डिटेल्स या ऊपर so what is the rank of India in environment performance index 2022 ये प्रीलिम में तुम्हें आसी पारे so तुम्हारा रैंक कितने ना इंडिया रो 180 so environment performance index किए पब्लिश करे इंडिया बॉटम ऑफ ऑल कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एनी तुम्हारा रैंक रो देखिबो फर्स्ट टाइम इंडिया सबुतरो बॉटम रो अछि इंडिया's rank is the lowest among 180 country after Vietnam Bangladesh and Pakistan 176 177 Bangladesh Vietnam 178 India 180 the overall score is 18.9 India ranked at the bottom so environment performance index कौन environment performance is a international ranking system ये measure करना environmental health and sustainability of the countries the EPI गोटे biennial index was started in 2002 रे ये किए करूची ना World Economic Forum WEF and in collaboration with Yale Center for Environmental Law and Policy and the Columbian University Center for International Earth Science Information Network तो ये माने सब मिसी की माने ये रिपोर्ट पब्लिश करूचती एवं रिपोर्ट पब्लिश करिया इंडिया रो रैंक
ये ହେଲା सो कोन फ्रेमवर्क से माने फॉलो करती 2022 रे 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर ग्रुप इनटू 11 इशू करा गला these issue categorized are in turn aggregated into three policy कोन ना environmental health and climate change environmental health ecosystem vitality and climate next our article noila next these indicator provide a gauge and a national scale of how close the country are establishing environmental policy target so ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍କେଲରେ କୁହାଯାଏ 0 to 100 ସ୍କେଲରେ from worst to best performance ଏ ବେଷ୍ଟ ହେଲା 100 worst ହେଲା 0 ଇଣ୍ଡିଆର 18.9 ଅଛି ଡେନମାର୍କ ଟପ୍ ଅଛି ତାପରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ ଦେନ୍ ଫିନଲାଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଥର୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି okay united states 20th out of 22 wealthy democracy re in the global and west and 43rd overall united states ଅଛି जोटा कि इंडिया रा जानिछो 180 रे 18.9 यार लोअर लेवल ଅଛି 2020 रैंक रे 2 वर्ष को थरे हुए एटा 2020 रैंक रे इंडिया रा 168 थिला एबे 180 देन किछि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एही तो देखिबो हिंदू न्यूज़पेपर आसे ए 54% यूज्ड ये वन बाय वन हमें देखिबा परे एड एक्सपेंडिचर ऊपर देखियो 54% यूज्ड फॉर मीडिया एडवोकेसी आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बिटवीन 2014 रु 2022 टोटल एक्सपेंडिचर जति को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ହେଇଛି तार 54% कोथरे खर्च कराई एडवर्टाइजमेंट so according to the women and child development ministry women and child development ministry minister Smriti Irani informed parliament that 401 crore out of 740 crore was assigned for media advocacy for this scheme. The critical element of the scheme included nationwide media and advocacy campaign and the multi-sectoral intervention in the selected 405 district कराई. Then a Twitter URL blocked. So 1122 number of Twitter uniform research locator blocked on the IT ministry directions up to June this year. Minister of State जोटे कि ये पार्लियामेंट्री ये जवाब देते Similarly, ये केमिति दिया गला 69 provision of section 69A of IT Act under 2000 रे मिनिस्टर सेट इथरे एक्ट अंडर सी करले Similarly, $6.2 billion green energy project, the amount to invested by the state-owned oil and ONGC, basically Natural Gas Corporation, and its partner in green energy project to produce कौन carbon-free hydrogen and green ammonia in the country as a part of ambitious decarbonization drive. So ये गोटे तुम्हें पाइबो 6.2 billion dollar. Then seaweed production 9.7 in million ton. India's potential in এটা बहुत important production of seaweed per year as against the poultry of 34,000 tons of produced in 2021. Similarly, last वाला 1 billion $1 billion amount is made by the gun manufacturer in US from selling AR-15 style gun over the past decade. So ये एक important है. So हमें वन बाय वन देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जोटा कि फर्स्ट इशू आसिला 54% हमर जतिक प्रोजेक्ट अछि तार इथरो खर्च कराइछि. So which ministry आसुछि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ which ministry BBBP so Ministry of Home Affairs, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Family Welfare, and Niti Aayog. So correct answer is number B, Ministry of. So Beti Bachao Beti Padhao is a very significant initiative launched by Government of India in 2015. It is launched to serve the purpose of creating general awareness and to promote girls' education in the country. The declining sex ratio denote the poor condition of the girls, children in our country. These initiatives taken are steps toward the empowerment of girls and women in the country. Female infanticide को preserve କରୁଛି ଆଉ education proper girl को ଦିଆଯିବା ପାଇଁ and future and provides them ତାଙ୍କର secure future କରୁଛି ଏବଂ provide them better opportunity equality ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଉଛି then what is URL URL full form कौन ना acronym for the uniform resource learning या uniform resource
locator. Okay, URL basically address of the document जोटा कि learning नहीं इटा भूल अछि uniform resource locator full form पचानी what is URL पर it is address of a document. URL stand for uniform resource locator. It is an address for a specific document found on the web. जोटा कि थिला URL ଉପରେ tutor. Then why is wind energy considered as a conventional source of energy? Wind energy is considered. So wind energy kahe conventional source of kara hochi. Kaina it is readily available and used for a long time. So it's conventional. Okay. Similarly, next है seaweed production. Seaweed ଉପରେ बहुत important होची हमें एटा देखिबा. Ministry of Fishery and Animal Husbandry and Dairying will set up a seaweed park. ସେଇଥିପାଇଁ news ରେ ଆସିଲା in Tamil Nadu to improve the livelihood of fishermen. Tamil Nadu has been requested to set aside space for special economic zone for seaweed farming. Seaweed देखिबो एटा इबे in 2021 the Technology Information and Forecasting and Assessment Council has launched a seaweed mission. IFAC, okay, Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairy. So yes, seaweed. So what is seaweed? They are a primitive marine, non-flowering marine algae without root, stem, and leaves. Play a major role for marine ecosystem. That's what can't you? Large seaweed form dense underwater forest known as a kelp forest, which act as underwater nourishers for fish, snails, and sea urchins. Okay, so ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ. ବେନିଫିଟ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦିଏ. Seaweed is a resource of vitamin, mineral, and fiber and can be tasty. For medical purpose, many seaweed contains anti-inflammatory and antimicrobial agent. Their known medicinal effect have been जोंटा कि legion for the thousands of years. Certain seaweed possess powerful cancer-fighting agent ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ. So, significant by an estimate, if seaweed cultivation is done in 10 million hectare or 5% of the exclusive economic zone area of India, it can provide employment to 50 million people. Set up a new seaweed industry, contribute to national gross domestic product, GDP ରେ contribute କରିପାରିବ, algal bloom ହେଇପାରିବ କୁ abate କରିପାରିବ, ocean productivity କୁ potential କରିପାରିବ, millions of carbon dioxide produce କରିପାରିବ, ମାନେ carbon sequestration ହେଇପାରିବ. Then it can also produce bioethanol of 6.6 billion liters. So these are seaweed that are benefit ये मन रखिथिबो 9.7 almost 10 million ton of seaweed production ହେଇପାରିବ ବୋଲି potential ଅଛି ତାକୁ ଯଦି କାମରେ ଲଗାଯିବ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ. Colombo denies report on Chinese ship. So reports say it will enter Hambantota in August and India says it monitoring the ship progress carefully. देखो चाइना रो कोन पॉलिसी string of pearls. China gonna string of pearls. Okay, the string of pearls policy of China, India closely monitor କରୁଛି କାହିଁକି ନା ये जो हम्बनटोटा पोर्ट ଟା कोन आके देखि दियो ये ये पटे हम्बनटोटा. So China रो चाइना ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିଜାର ପୋର୍ଟ ସବୁ ନେଇଛି ଗ୍ୱାଦାର ପୋର୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ. So सब इंडिया को घेरिया ପାଇଁ जोटा कि स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स କୁହାଯାଏ ଚାଇନାର ସବୁ ପୋର୍ଟ ବାଂଲାଦେଶର ଚିତ୍ତଗଙ୍ଗ ପୋର୍ଟ ସହିତ ସିତୁଇ ପୋର୍ଟ ସହିତ ମିଆଁମାର ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛି. ହାନିଆନ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି ଚାଇନା ସବୁ ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ରେ ତାର ଜାଗା ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଚାଇନା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି. ତ ସେଇଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲା ଆମେ କ୍ଲୋଜଲି ମନିଟର କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲୋକ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ପବ୍ଲିକ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଚାଇନା ର ଯୋଉ ପୋର୍ଟ କୁ ସିଏ ନଉ. ଲୋକ ବି ଚାହାନ୍ତି କି ପବ୍ଲିକ ପୋର୍ଟ ଚାଇନାର ସରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚାଇନା ନଉ. ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଚାଇନାକୁ 99 ଇୟର୍ସ ର ଲିଜ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି. ଦେଖିବା ୟା ଉପରେ ଇଏ. So Hambantota port is located the right in the middle of the vital energy supply line in Indian Ocean connecting Middle East and East Asia. Sri Lanka has signed a 1.1 billion dollar deal to sell 40-70% stake of strategic Hambantota deep sea port to China. Okay.
70% stake ଦେଇଛି 1.1 billion. So Hambantota port is a deep sea water. So ସବୁଠୁ important है deep sea water port ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ship ଯାଇକି ସେଠି land କରିପାରିବ ସେଠି dock କରିପାରିବ. The southern tip of Sri Lanka ରେ ପାଇବ. It is under 99 years of lease agreement and China will invest up to 1.1 billion dollar in the port and marine related activity. China ତାର ଗୋଟେ base ବନେଇଦେବ ସେଠି. The deal had fanned a concern of countries with competing strategy interests with China, particularly India and US. India is closely monitored. Local resident of Hambantota ମଧ୍ୟ ବି protest କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର national asset को ଚାଇନା को न ଦିଆଯାଉ तो ये देखो श्रीलंका ये हम्बरटोटा पोर्ट है ये पोर्ट ऑफ हम्बरटोटा न्यूएस्ट पोर्ट एवरेज ऑफ 29 vessel per month ये डॉक होची पोर्ट ऑफ गैले एट गोटे पाइबो नेचुरल हार्बर सेकेंडरी पोर्ट इन श्रीलंका 6 vessel per month ये कोलंबो पोर्ट ये सब लार्जेस्ट पोर्ट इन श्रीलंका विथ मोस्ट ट्रैफिक फॉर कंटेनर टर्मिनल सेठी अछि एवरेज हला 335 vessels per month एटी डॉक होची पोर्ट पेट्रो एटी पाइबो जाफना रे तो मेजर पोर्ट एगुड़ा सब पाइबो दीज आर मेजर पोर्ट चारिटा मेजर पोर्ट पोर्ट ऑफ जोंटा कि त्रिकोणमेल वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर बेसिकली okay so these are our minor port kichi achi pedro ho kankan centurai ho then uluville ho ये सब तुमे पाई परिबो then next इसे देखिबा हमें कोन ना तुमरो wildlife amendment to save entrepreneurs from harassment the move may decrease the burden on judicial system center propose करछि कोन amendment कोन ना environment protection act or to save the law abiding citizen जे कि entrepreneur जे कि जाकी harass हो छथि in case of जोटे कि नॉन जोटी compliance केटी भूल हे गला forest जाई जंती जे स्टडी करछि forest रे ताको harassment न हो ता पई punishment बहुत हाई थाए तो सेही पई ताको कम punishment दिया जाय पई गोटे amendment आछि so question ala ki when did the environment protection act 1986 came into force 1st April 1986 1st March 1986 1st May 1986 या 19 November 1986 okay environment protection 1986 tomorrow November 19 November 1986 so 19 November 1986 से environment course ହେଇଥିଲା ये to establish a framework for studying planning and implementing long term requirement for environmental safety and laying down the system of speedy and adequate response to the situation threatening the environment so माने ऑब्जेक्टिव कोन प्रोटेक्शन है ना एनवायरनमेंट को इंप्रूव करिया पे so constitutional provision कोन अछि the environment protection act was enacted under the article of 253 of the Indian constitution एटा कोन कहउची which provide for the enactment of legislation for the giving effect of international agreement then article 48a the directive principle of state policy कोन कहउची constitution specify that states shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Similarly, Article 51A further provide that every citizen shall protect the environment. So, ये जोटा कि fundamental duties तुम्हें जानी थी वो 48A conservation protection और improve करिवा environment. तो ये सब जिनिस तुम्हें जानी परिबो so it is authorized the central government to protect and improve environment quality, control, reduce pollution from all sources, and prohibit or restrict the setting and operation of any substantial industrial facility on environmental ground. So to establish authorizes charged with the mandate of preventing environmental pollution in all its form and to tackle specific environmental problem. ये central government को दायित्व दिया जाइए. So last amendment ହେଇଥିଲା 1991 रे. So ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ amendment ହବାର there are no plan to set up complete committee for uniform civil code. So uniform civil code रे बहुत बड़ा हल्ला चलଥିଲା এই ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଥିଲା manifesto ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ government ଯୋଉଟା କି present NDA government article 44 of the constitution ये mention what is uniform civil code
Uniform civil code is one that जोटा कि entire country गोटे law applicable हबो on to all religious community to their personal matters such as marriage हो divorce हो inheritance हो adoption गोटे act रहबो. So article 44 of the constitution laid down that state shall endeavor to secure a uniform civic rule for citizens throughout the territory of India. So Article 44 में इटा पाइपरिबो. Article 44 is one of the directive principles of state policy and it's defined the Article 37 are not justiciable, that not enforceable by the any court, but the principle laid down there in fundamental in the government. So Article 44 directive principle of state policy जोटा कि तुमको बाउंड नुहे तुमको फॉलो करिया पे बाउंड नुह. Minister promises better policy for the migrants. Today ILO meets. So आमे देखिबा ILO International Organization तुमरो पेपर 2 GS पेपर 2 रे पाई परिबो. ओके. So ILO कोन जानचो गोटे सबुटु वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जोटे कि लीग ऑफ नेशन रो एजेंसी जने थिला. लीग ऑफ नेशन केबे हितला 1919 रे वर्ल्ड वॉर 1 परे. ओके जोटे कि यूनाइटेड नेशन रो पुराना एजेंसी. So Geneva headquarter yaro Switzerland. It deals with labor issue, particularly international labor standards, social protection, and work for opportunity for all. India is a founder member of ILO. China is the British India. ILO registered complaint against the entity that are violating the international rule. However, it does not impose sanction on the government. 187 member states, 186 out of 193 UN members of 3 plus Cocos Iceland are the member. ये 1969 नोबेल प्राइज मध्ये ऑर्गेनाइजेशन पाइथला. ये रिपोर्ट पब्लिश करे कोन ना वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट मध्ये पब्लिश करे. देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये लास्ट काली आदमी पढिथिले जोटा कि गवर्नमेंट वरीड अबाउट टीन प्रेगनेंसी. So health minister men's participation will be encouraged in the family planning program. ये चार्ट देखो जोटा कि धीरे धीरे देखो ये कमी कमी आसुची तुमरो ट्यूबेक्टमी और वासेक्टमी. सो द चार्ट शो द नंबर ऑफ वासेक्टमी. वासेक्टमी किए करे बेसिकली वासेक्टमी किए करे मेन. सो सो वासेक्टमी सॉरी फीमेल और ट्यूबेक्टमी हला मेल. So vasectomy is surgical procedure, female sterilization and tubectomy is surgical procedure of male performed in India between 2014-19. So tubectomy are nearly 10 times higher than the vasectomy every year. Okay. India second highest population in the world. So देखिए national program for family planning. India was the first country in the world to launch a national program for family planning when it did so in 1952. In India, family planning has been chiefly due to the effort of the government. The program has undergone a massive transformation from its early days, and when the focus was in terms of clinical approach to today's when focus is on productive health and in the productive maternal and infant mortality rates. ଆମେ ଦେଖିଲେ infant mortality rate ଆଉ total fertility rate हम तो हमारे तो गवर्नमेंट का नारा अछि टू चाइल्ड नॉर्म है ना एबे सेटा भी कंटिन्यू अछि बट इम्पोज कराइनी. सो नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट हेइतला सेइतरे एटा मन रखिबो तार थीम कोन सस्टेनिंग एफर्ट्स स्टीयरिंग पार्टनरशिप शेपिंग विजन इन द फैमिली प्लानिंग. सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास एंड सबका विकास. ओके. सो नेशनल फैमिली प्लानिंग ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर आसी. ये या ऊपर हमें डिस्कशन करथिले जोने की लास्ट क्लास रे ये जो टीएफआर 2.1 है. तो जॉइन करो ओडिशा जॉब एकेडमी जो सहित रे ओएस हब आउ गोटे प्ले स्टोर अछि जेथि केवल ओएस ପାଇଁ प्रिपरेशन हबो. सो ओएस प्रीलिम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो जाई छी. जदि करिया चाहू यू विल गेट ऑनेस्ट एवरीथिंग डिटेल्स. थैंक यू. जो जस्ट सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु एवं बेल आइकन को जरूर ये करंतु जरूर जरूर वीडियो को लाइक करंतु. थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर वाचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय जगन्नाथ. नमस्कार.